Good morning, students. Today we will discuss teacher-centered method. The term teaching method refers to the general principle, pedagogy, and management strategies used for classroom interaction. Teacher choose of teaching method depends on what fit you, your educational philosophy, classroom demography, subject matter, and school uh, mission statement. Broadly, we classify our teaching methods in two category: child center method and teacher center method. Today we will focus on teacher centered method. Learning objectives of this lecture: to understand the concept of teacher centered method, to acknowledge the importance of teacher centered method, to identify the goal and objective of teacher centered method. Meaning of teacher centered method: teacher are the main authority figure in a teacher centered instruction method. Students are passively receive knowledge from their teachers through lecture or direct interaction with an end goal of positive result from testing and assignment. A teaching method where the teacher is actively involved in teaching while the learner are in passive repetitive mode listening as teacher teaches. Basically, the all activity are rounded to teacher. Characteristics of teacher center method: the teacher is the center of knowledge and change in the charge of learning. Students are usually passively receiving information. The instruction role is to primary information giver and primary evaluator. It means instructor role. It means role of teacher doing two role: information giver and evaluator. Students are viewed as empty vessels who passively receive knowledge from their teachers. Teachers and professor act as the sole supplier of knowledge, and under the direct instructions models, teachers often utilize systematic script lesson plan. Teacher center instruction is fairly low teach, often relying on the use of textbooks and workbooks instead of computers. Now we will discuss some teacher center method. Teacher talk, lecture method, demonstration,
assignment and homework, memorizing, reviewing, questioning, discussion. These are the most frequently used by teacher. In large group, teacher generally use lecture method. First, we will discuss lecture method. Teacher is a primary communicator of knowledge. Teacher directly manage the pace and sequence of instructions. Teacher include lecturing to student formal, talking with the student informal. Whenever teacher give some knowledge according to your syllabus, according to your curriculum, it means teacher give some formal information. Whenever teacher give some other information for your not part of the curriculum, that is informal. In lecture method, teacher should remember, you can't teach at students, but this does not ensure students have learned the material. You must monitor student to ensure that you have not lecturing too long, because in lecture method, teacher transfer his or her knowledge to student, but in lecture method, student generally sitting idle and receiving knowledge. So it is not necessary student grasp everything. How we improve our teacher talk? These are the new approaches for teacher talk. Feedback lecture. Feedback lecture time duration 10 to 15 minutes. Students are given outline of the lecture beforehand. The teacher lecture from the outline with student taking notes. Breakout group into 15 to 20 minutes. Student are given question to answer based on the lecture and their notes. Guideline lecture. Again, a guideline lecture should be 10 to 15 minutes. It is used and structure around the questioning given to the student. The teacher uses a list of big ideas, keys, concept and facts to ensure understanding. Responding lecture, demonstration lecture, pause procedure lecture, thinking, write, discuss, lecture with
graphic co-organizer. These are the new approaches in teacher talk method. Generally, the lecture time in new approaches to 5 to 10 minutes. A teacher giving some instructions according to the name of the approaches. How to improve lecture? Conduct lecture more as discussion, because we all know whenever teacher gives some information, there is no way to identify that student is understand the concept and other things. Whenever teacher discuss with students, teacher understand the problem and other things to student. तो हमेशा क्या करना चाहिए, टीचर को स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन करना चाहिए. डिस्कशन करने से टीचर को पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स को वो कंसेप्ट या जो नॉलेज है जो ट्रांसफर करना चाहता है वो समझ में आया या नहीं आया. क्वेश्चन पूछ सकता है टीचर, एक फ्रेम क्वेश्चन पूछ सकता है. इंटीग्रेट different types of lecture and organizing patterns. Integrate visuals and manipulatives into the lecture. Guideline when lecturing. Have a beginning and logical order. Reinforce with visuals. Encourage students' participation. Have a clear ending followed by activity. Keep teacher talk short. Keep peace relatively quickly. These are the guidelines to improve lecture method. Always, whenever teacher start lecture method, always try to connect student previous knowledge to new knowledge. Prepare notes, outline. Do not read lecture. It means आप क्लास में जब जाएंगे तो अपना लेक्चर पढ़ेंगे नहीं, उन्हें उसको समझाने की कोशिश करेंगे और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में उसे कंप्लीट करेंगे और जो स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट वो बढ़ाएंगे, उनसे क्वेश्चनिंग करके, उनसे डिस्कशन करके. गाइड स्टूडेंट इन नॉट टेकिंग. उसमें इम्पोर्टेंस जो चीजें हैं वो उनको नोट करने के लिए स्टूडेंट्स को कहेंगे ताकि जो उनको बाद में रिकॉल करने में आसानी रहे. डू नॉट जस्ट समराइज टेक्स्ट बुक और स्टूडेंट विल नॉट रीड इट. Augment and supplement.
Move about the room while lecturing. जब हम लेक्चर मेथड यूज करेंगे तो हम स्टिमुलस वेरिएशन का भी प्रयोग करना चाहिए। उसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू आवर टॉपिक हमें मूवमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पोज और गेस्चर बनाकर खड़े हो गए, अपनी पॉकेट में हाथ डाल के खड़े हो गए या चेयर पे बैठ गए, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। एक्सप्लेन वोकेबलरी, हार्ड वर्ड्स को एक्सप्लेन करना चाहिए। यूज एग्जाम्पल्स एंड analogies to bridge knowledge. Establish and maintain eye contact. Develops rapport and help with classroom management. Do not talk too fast. It means बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी भी नहीं बोलना चाहिए जिससे स्टूडेंट को समझ में नहीं आए। बहुत ज्यादा स्लो मोशन में भी नहीं चलना चाहिए कि जो क्लास है वो नीरस लगे, ऐसा लगे कुछ हो ही नहीं रहा है। Make sure you can be heard and understood. Avoid monotonous situations, monotony situation. These are the some guideline when we using lecture method, and how to improve our lecture method whenever we use this type of guideline. Now second is demonstration. The term demonstration refer to a wide variety of potential educational project, presentations or product touch with students, demonstrate what they have learned. Demonstration is a methodology liked by the student, and because in demonstration method, a student learning by doing. Students are actively engaged in learning activity. Guideline when demonstration. Decide the most effective way to conduct the demo. Teacher and student helper. Student, entire class or small groups. Teacher first, then a small group. Repeat. Make sure the demonstration is visible to all the student. Always you have B plan. हम जब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज करें तो हमें ऐसा करना चाहिए कि सभी बच्चों को विजिबल हो। ऐसा नहीं हो हम आगे 2-4 बच्चों को आगे अपने खड़ा कर लें और वही उसमें इन्वॉल्वमेंट उनका हो। ऐसी जगह पर खड़े होके और जो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं वो इस प्रकार से हो कि सभी बच्चों को वो विजिबल हो, सभी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, लर्निंग कर सकें। और हमेशा
हमारे पास सेकंड प्लान होना चाहिए। अगर कुछ कमी रह जाती, पहला वाला प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, तो हमेशा हमारे पास दूसरा प्लान होना चाहिए। मॉडल प्रॉपर सेफ्टी precautions. Now third is assignment and homework. Assignment homework. Practice should be incorporated into the instructional sequence as there in a class assignment or an out of the class assignment homework. Types of practice. Independent practice can take place in a school or as homework. The student is expected to complete the task without assistance from the teacher, other students, or anyone else. Independent practice is also gathered. And independent practice जो उसमें जो स्टूडेंट अपने आप काम करता है अंडर द गाइडलाइंस ऑफ टीचर. Guidance practice always take place at the school, in a classroom, library, studio, laboratory, or computer room, where the teacher can observe and give the feedback. The teacher actively interact with the student, providing over the shoulder instruction to an individual or a group. Tasks are gathered. Benefits of homework: improve academic performance and study habits, develops autonomy and self-discipline, promotes efficiency by effectively using both the classroom and the home for learning, facilitate parental involvement in children's education. These are the benefits of homework. बट हमेशा हमें होमवर्क देते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो हम होमवर्क दें तो इस तरह का होमवर्क ना दें कि जिससे कि उसमें स्टूडेंट की जगह पेरेंट्स का या उसके जो भाई बहन का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो और जो स्टूडेंट है वो एक पैसिव लर्नर बनकर देखता रहे. तो होमवर्क देते समय हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चा है वो स्वयं उन कामों को करे. फोर्थ टीचर सेंटर मेथड इज memorizing. Sometimes student must memorize things even without much understanding. Language, alphabet, math, number system, chemistry, common element symbols, play trumped fingering, guideline for memorizing, avoid over
use of memorizing. If possible, have student understand meaning before memorizing. Use minimo nice to add student in memorization. Fifth, teacher center method is reviewing. In journal, reviewing is a positive and necessary practice. Recall is improved. Understanding in improved by strengthening semantic networks. Alternative reviewing technique. A student, some may rise quiz games, discussion, board questioning, dramatization, application problems. Sixth, teacher center method is questioning. It is an interrogative expression often used to test knowledge. Well-formed question help students develop their critical thinking skills, provide an opportunity for students to elaborate and adjust their responses based on their interaction with the teacher and other students, as well as to put forth unique insights. It is one of the easiest way to convert instruction from passive to active learning experiences, but it must be planned. क्वेश्चनिंग मेथड टीचर सेंटर मेथड का एक बहुत उपयोगी मेथड है, क्योंकि टीचर के पास सबसे अच्छा जो मेथड है क्वेश्चन, उसके द्वारा वो बच्चों में कितना अंडरस्टैंड हुआ है, कितना नहीं हुआ है, कहाँ उसको प्रॉब्लम आ रही है, वो जानने के लिए जो क्वेश्चनिंग है वो बहुत अच्छा मेथड है। और इसको हम जो हमारे जो प्रीवियस जो मेथड है, जैसे लेक्चर मेथड है, उसमें भी यूज कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन है उसमें भी हम यूज कर सकते हैं। तो लेक्चर मेथड को भी हम फर्दर और सब डिवीजन कर सकते हैं, लेक्चर कम डिस्कशन, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, इस तरह से उसमें हम अपने जो डिस्कशन को या अपने क्वेश्चनिंग को डालकर जो नॉलेज है जो स्टूडेंट की उसको चेक कर सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर क्वेश्चनिंग, use wait time if student does not answer, then repeat the question, rephrase the question, simplify the question, ask a student to attempt a rephrase, 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 your question.
Break the question down into its component parts. Make your question more specific. Ask a student what about the question that they are finding difficulty. Try to elect some kind of answer. Do not just move on to another student. Encourage student to answer to the class, not just one. और हमेशा जब हम क्वेश्चन करें तो हमारा सभी स्टूडेंट से एक आई कांटेक्ट होना चाहिए, और हमेशा कुछ बच्चों से या एक दो बच्चों से ही क्वेश्चन नहीं पूछते रहना चाहिए। उससे ये होगा कि ये क्वेश्चन हमारे लिए है ही नहीं, ये क्वेश्चन तो सिर्फ पर्टिकुलर उसी स्टूडेंट के लिए। ऐसी क्लास में स्थिति पैदा हो जाती है। फ्रॉम क्वेश्चन दैट आर prescribed and definite, not ambiguous. Encourage student to ask qualifying questions. Keep questions short and to the point. Do not ask for trivial information. Hold student accountable by expecting, requiring, and facilitating the participation and contribution. Never answer your own question if the student know you will give them the answer after a few seconds of silence anyway. There isn't incentives. Number 7th teacher center method is discussion. Leading an effective discussion can be one of the most difficult tasks of teaching. It requires a commitment to the shared dialogue with the student and great restraint by the teacher. Who naturally want to work through his or his planned lesson. Best practice in discussion. At the beginning of the year, have a student discuss the nature of a good discussion. Create a set of guideline or rule for discussion that ensure civility. It means जब हम डिस्कशन करें तो हम एक गाइडलाइन तैयार कर लें कि आपको कितना जैसे टाइम ड्यूरेशन बांध दें कि आपको 2 मिनट डिस्कशन करना है, 3 मिनट डिस्कशन करना है, और जो टॉपिक पहले हो चुके हैं मतलब उसमें एक गाइडलाइन तैयार कर देंगे तो जो डिस्कशन मेथड है वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट होगा. प्लान द डिस्कशन. What topics do you want to cover? In what order? What you will do if nobody says anything?
Create a stimulus, usually provocative questions, and emotionally laced statement, a position that no on the surface appears to the contradiction. These are MCQs. To maintain interest among the student in class, the teacher should be discuss with the student, ask a question from the student, use blackboard, tell a story of a student. The suitable answer is B. Ask question from the students. Symposium is a type of discovery method, discussion method, lecture method, demonstration method. Answer is B. Discussion method. Students are passive. We already discussed in our first teaching method, project method, discovery method, lecture method, and inquiry method. Suitable answer is C. Lecture method. The goal of teaching is to give information, to involve pupils in activities, to impart knowledge, describable change in behavior. Suitable answer is the goal of teaching is describable change in behavior. The rules of presenting the content to make them easy are called method of teaching, maximize of teaching, technique of teaching, teaching strategies. Answer is B. Maximize of teaching. These are the reference you go through to further more studies. Thank you, students, for giving me time. These are the reference you use to read out more material or more knowledge to टीचर सेंटर मेथड. अब हम वापस से एक बार अपनी जो हमने आज अपनी क्लास में देखा है उसको रिकैप कर लेते हैं. आज हमने अपनी क्लास में टीचर सेंटर मेथड को डिस्कस किया और उसमें हमने जो सबसे पहले टीचर सेंटर मेथड होता है उसको देखा, मीनिंग ऑफ टीचर सेंटर मेथड देखा. उसके बाद में हमने टीचर सेंटर मेथड की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी कि टीचर सेंटर मेथड की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. और टीचर सेंटर जो मेथड रहते हैं बेसिकली इसमें जो टीचर है वो एक्टिव रहता है, स्टूडेंट है वो पैसिव रहता है और टीचर अपनी जो नॉलेज है उसको ट्रांसफर करता है. ये बेसिकली टीचर सेंटर मेथड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. फिर हमने कुछ टीचर सेंटर मेथड देखे थे जैसे टीचर टॉक, डेमोन्स्ट्रेशन, असाइनमेंट, होमवर्क, मेमोराइजिंग, रिव्यूइंग, क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग. इस जो प्रेजेंटेशन है इसमें हमने टोटल 7 प्रकार के जो टीचर सेंटर मेथड है उनको हमने डिस्कशन किया था. ये सारे वो मेथड हैं जो जनरली हम अपनी क्लास के अंदर जो टीचर है वो मोस्ट यूज करता है और जो लार्ज नंबर ऑफ क्लास साइज होती है उसमें टीचर सेंटर मेथड जनरली यूज किए जाते हैं.
और लेक्चर मेथड तो बहुत कॉमनली यूज होने वाला मेथड है। और डेमोस्ट्रेशन जनरली साइंस और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं वहां पर यूज होते हैं। असाइनमेंट और होमवर्क डेली अपनी क्लास में जो टीचर है वो देता है। क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशनिंग ये जो हमारे डेमोस्ट्रेशन एंड लेक्चर मेथड है उसके अंदर यूज करने चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट है उसका जो पार्टिसिपेशन है उसमें बढ़े। तो ये आज हमने अपनी क्लास में ये मेथड देखे थे। होप आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और कैसे यूज करना है और क्या क्या सावधानियां रखनी है, इन चीजों को आप ध्यान में रख पाएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।